हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो नमस्कार दोस्तों। वेंसडे लाइव में आपका स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस वेंसडे लाइव सेशन। एवरी वेंसडे वी आर हियर टॉकिंग अबाउट मार्केट, टॉकिंग टू फ्यू पीपल। अपने मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रियल में मार्केट में इन्वॉल्व है, उनसे बात करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अब क्या होगा। और साथ साथ में एक और मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि उनका मार्केट को प्रैक्टिस करने का जो प्रोसेस है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आज मेरे साथ जुड़े हैं 4 एक्सपर्ट्स, ओके। और हम पांचों आज मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो एक बार आपको फ्रेम में दिखा देता हूं मैं। यस, वी हैव अमेजिंग अमेजिंग पीपल। ब्रह्मचारी सर, ज्योति ज्योति जी, अभिजीत दा, एंड वी हैव अ डेब्यूटेंट टुडे। Hi. We have a Thank debutant you. today जिनसे हम बात करने वाले हैं because he is doing some great work in market as a full time trader। तो हम अखिलेश से बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि उनका प्रोसेस क्या है। आई हैव नॉट रिकॉर्डेड फेस टू फेस येट विद हिम, बट आई एम क्रेविंग टू रिकॉर्ड वन बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं अखिलेश। सो वेलकम ऑल फोर ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ टाइम। Good चलिए, evening, तो Vivek. थैंक यू दादा। Good सो evening. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक Thank you, वन sir. एट अ Thank you. टाइम। तो मैं एक एक करके जाऊंगा। सो अलाउ मी टू बी मोर रैंडम इन सिलेक्टिंग पीपल जिनसे मैं बात करने वाला हूँ। नो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अखिलेश बिकॉज अखिलेश इज द डेब्यूटेंट मार्केट में काफी टाइम से अखिलेश। सो वी वांट टू नो अबाउट यू फर्स्ट, और फिर उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू यू एनालाइज मार्केट। कैसे आप जज करते हैं कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है। फर्स्ट बट अबाउट यू। So, English, Hindi, any particular language of preference? हिंदी हिंदी Hindi. Okay. हिंदी और बीच में So, इंग्लिश डाल देंगे। okay. So, मैं मार्केट्स में 20 साल से हूँ। एक्टिवली ट्रेडिंग फॉर लास्ट 5 years, 5 साल से एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहा हूँ। And obviously, the learning curve has been very, very steep over this period. So initially जब मैंने ट्रेडिंग चालू की थी, तो when I used to meet experts or people who had experience, मैं ये क्वेश्चन पूछता था लोगों से कि what strategy you use, what indicators you use, as if any particular strategy or any particular indicator would give me the mantra for success in trading. एंड जितने अच्छे एक्सपर्ट्स हैं जो कि रियल में मार्केट में पैसे बनाते हैं, वो हमेशा मुझे एक ही जवाब देते थे कि इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी. So trading is not about any indicator or which will, or any mantra, any particular strategy which will make money. It is all about you as an individual. कि आप means because trading is a lot about psychology. तो सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है, सबका टाइम फ्रेम अलग होता है, सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है. सो यू हैव टू इवॉल्व एज ए ट्रेडर एंड come up with a strategy which works for you or which works for your personality. करेक्ट। So as I mentioned, पिछले 5 साल से एक्टिव ट्रेडिंग कर रहा हूँ. तो उसमें based on that learning curve, I have come up with something which I believe works for me. ओके Yeah. ओके। सो जो आपके लिए काम कर रहा है और जो शायद आने वाले दिनों में करता रहेगा, तो एक क्वेश्चन है मेरा विच इज माय एक्सपीरियंस आल्सो, कि जो आज की रेट में वर्क कर रहा है वो आने वाले कब तक समय तक वर्क करेगा। क्या वो परपेचुअली वर्क कर सकता है? So again, so market is market. So आज मैं 5 साल से हूँ. 20 साल, 25 साल, 40 साल एक्सपीरियंस वाले भी यही बोलते हैं कि मार्केट में आज मैं सीख रहा हूँ. I am a student of the market. So market always teaches you continuously. So there are strategies which will work and which you will have to adopt based on changing times.
So last year the market was completely different. This year the market is completely different. So so a strategy which is working right now for me may not necessarily work next year. सही बात है. So Abhi, you are active trader. I have seen your performance and you have done very good in your 5 years of active trading career. इसीलिए आप स्टॉकेज सोशल के अंदर में यू आर वन ऑफ द ग्रीन टिक होल्डर्स. तो मुझे एक बात Okay, बताइए, हम जो इवेंट करने वाले हैं 29 तारीख को, विच इज लाइव ट्रेडिंग, एंड दिस इज right, फॉर पीपल हु आर पार्ट ऑफ स्टॉकेज क्लब, उनके लिए हम ये कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली. तो right, दैट इज ऑल अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. तो आप जब right. इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो क्या पैरामीटर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं? So see, basically मैं एक तो diligently रोज NSE के कैश मार्केट्स और FNO के भाव कॉपी डाउनलोड करके अपना पूरा एक्सेल में एक एनालिसिस करता हूँ. एंड उसमें दो चीज़ों पे मैं एम्फेसिस देता हूँ. एक है रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड दूसरा है कैश में डिलीवरी वॉल्यूम्स. Because so when there are big delivery volumes happening in a particular sector, then जो इन्वेस्टर्स उसमें कैश में पोजीशन बनाते हैं, those are long term positions, while an FNO position can be short term. So I try to figure out कि strong hands क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, and if based on that I am able to identify themes. For example, अगर मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर रिलेटेड स्ट्रेंथ पे आउट परफॉर्म कर रहा है एंड उसमें कैश में डिलीवरी बाइंग हो रही है, देन द स्मार्ट मनी इज शिफ्टिंग फ्रॉम अदर सेक्टर्स टू ऑटो सेक्टर. तो फिर मैं हमेशा अपने स्कैनर में एक लगा के रखूंगा कि ऑटो सेक्टर में आज मतलब I will have few stocks identified and in general obviously सारे stocks पे नजर रखता हूँ, but few stocks which are in my radar. तो अगर वो मुझे अच्छे लेवल पे मिलता है या उसमें अच्छा मोमेंटम दिखता है for that day, I try to play that on the long side. But similarly अगर ऑटो पे लॉन्ग व्यू है एंड उस दिन अगर वीक है तो I will try to avoid shorting auto as a strategy, because in general because relative strength and filtering के basis पे मैंने ये decide किया कि मेरे को auto long खेलना है. So सही है. even if on one particular day it is weak, for intraday positioning I will never try to short it. फेयर पॉइंट. तो जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ जैसे सुनता हूँ मेरे कान खड़े हो जाते हैं, मुंह में पानी आ जाता है. Obviously आप you are a big proponent of relative strength, so so I follow आई with थिंक you on that. ये भी एक रीजन हो सकता है कि स्टॉकेज सोशल में हम लोग सबको इतना बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की, बिकॉज एक वो बायसनेस है कि हाँ ये मॉडल सालों साल से काम कर रहा है और ये करता ही रहेगा, खाली फॉर्म ऑफ द Correct. मॉडल विल चेंज. बट आई एम रियली Right. ईगर एंड एक्साइटेड टू हियर लाइव ट्रेडिंग विथ यू ऑन 29th. तो मैं तो शुरू I में am आऊंगा, थोड़ा बहुत बोलूंगा, बट मैं एक्चुअली सुनने के मूड में उस दिन. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम रियली एक्साइटिंग प्रोसेस फ्रॉम यू, नॉट स्टॉक आइडियाज, but intraday का process is definitely something which I'm looking forward to. yeah, look चलिए, forward to thank you. sharing my thoughts तो with एक the बार मैं wider अब आगे audience. बढ़ता हूँ. Let me just ask other guests also to come on board. और फिर वापस आऊंगा आपके पास पे when all of us will be together. Okay. So let me call the youngest of the lot, Mr. Brahmachari. Good evening, Brahmachari sir, Vivek. let me Yeah, just start and tell you that the kind of stock ideas you are giving in Stockage Social is amazing. I mean, the level of accuracy, you are actually a hidden gem. Not many thank people you. know of you. You should be there everywhere. Amazing Th- study, amazing conviction. I must congratulate you for your extensive experience of tracking market and being accurate in the market so many times. Thank you for being part of Thank you, sir. Stockage. Thank you very So much, Vivek. now that you are here, I want to utilize this opportunity to talk about current market. So Yeah. what is happening around 200 days, going here and there? What do you think? What is going to happen? Yes, it is. There are two, three positive developments happened last week. One thing is it is above the 200 EMA, that means Yeah, yeah. exponential moving average. At the same time, it was retraced 38.2% of the whole downtrend.
That is another development happened. And Hmm. one more important thing is it was almost tested the previous swing high. Uh, Yeah. uh, yeah, it is almost tested, not at touch that, but it almost was there. Roughly about 50, 60 points distance is there. At Yeah. the same time, importantly, the whole rally from the last month's low to here, it was on the lower volume. That is my suspicion. At the Oh. same, that is all 100% on the low volume rally. Generally, what happens is any rally on a low volume is not trustworthy. So that is my Hmm. suspicion. The second suspicion is on the relative strength pattern. So still below RRG relative strength, and at the same time relative momentum also lower than 100 point if you compare with the broader index, CNX 500 index. So these are the two suspicious. There are two positive directions. Last 2 days of downtick was as expected because it was an exhaustion last weekend. So after that, today it was maybe a short covering. I cannot assure of that. I have to check the data. Second thing is the rollovers are not up to the if still below the last 3 months average and last 6 months average, and even below the last month rollover on this particular day. So these are the suspicions. So once what I do is if I want to convince about the uptrend has already begun. So any uptrend has to make at least two higher highs and two higher lows. Okay. So that has to come, even if it crosses the prior swing high, and it has to retrace back at some point of time and make a higher low and moves up high. Then I'll convince about the uptrend has already begun. So now Yeah. I'm bit cautious. I'm bit cautious. At the same time, I'm not shorting. I'm not long also. I'm a neutral guy now. So today, what I have given is all the picks which I have made in a higher lifetime, near lifetime highs, or the above the prior pivot points. So where there is a relative strength, higher relative strength, and the stronger performance on the Q1 results also. So these are the picks where the broader, if you compare with the broader market, higher relative strength and higher relative momentum, and the earnings growth. These are the important things to watch for now. So sector rotation is completely, as we discussed earlier last week. Also, I posted in the Stockit Social. Yeah. Exactly that is happening. Sector rotation is perfectly happening. So for the last 4 weeks, I am convinced about that there is little momentum on the some of the laggard sectors, and there are already which already reached the leading quadrant are also losing momentum, like metals and auto also. Today the auto stocks were little laggards today. So this sector rotation is happening very perfectly manner, and the money is flowing into different sectors and different stock specific actually. Yeah. So if you look at the churning and the delivery ratios, there are a lot of things are happening behind the screen. So we need to focus certain pockets with a positive mindset and go ahead with the stocks with the conviction levels. And you prefer to lose 3 to 5% money and get 15 to 25% money. That's a strategy for now in the current market conditions. I totally agree. I'm with you on this, sir. Absolutely bullseye. Sir, so Yeah. intraday trading. Now this is Yeah. you I've seen you're very good in the swing part. Where Yeah. keeping position for long period, including options. So intraday trading, how it is a different ball game and what kind of parameters one should see trading intraday. Yeah. Intraday and the positional swing and the investing. These are three different games. One has Hmm. to prepare for that. Intraday is more emotional, more disciplined person, more patient person will win. If you are an emotionally balanced person, then your game is yours. If you are not emotionally imbalanced, then the most of the things don't look at the if you look don't look at the anything can happen on the chart. So at least trade setups will is very key for an intraday trader, and the discipline to follow those trade setup rules, because a strategy gives you the entry, exit, and all the levels, right? So strategy means your entry point. It gives you the entry point. At the same time, it gives you how much you can lose probability,
and how much you can win. So this is the risk management has to tell our strategy first thing. So if you have a conviction on your strategy, at the same time you have to follow those rules on the disciplined manner. At the same time, if you identify a stock or index before the market opens, then you once the market opens, the rules may not work for you. Sometimes the trade may not come for you in your line. Then wait for the trade to come on your place. So that is my intraday thing. For the swing, I used to give at least 1 to 5 day time frame swings, basically. Any Hmm. price, any trend, basic rule of the market is it moves in trends. Means nothing will go straight line fashion, right? So it moves in the trends. So those trends moves are in the swings only. So these swings we need to catch, and that those price swings always matter for a short term trader. So I believe strongly in that price swings simply. I'm sure we are going to learn that science perfectly on Yeah. 29th. So club members are going to really find value in the knowledge which you will share. So I'll Yeah. come back to you, sir. Now I need to go to Jyoti ma'am, who is another star we have in Stockish Social. She has been absolutely bang on with her views on market and stocks. And one thing I like about Jyoti ma'am is when she is confused, she'll say, "I'm confused. I don't know what is going to happen." That is a very important, call people generally want to take. That if you don't know, you don't know. You don't have to just say for the sake of saying. So, Jyoti ma'am, intraday trading on 29th. What are you giving on that day for to us? First of all, intraday is not my cup of tea because I'm from the old school offering जहाँ पे intraday कुछ हुआ नहीं करता था. Uh, सेकेंडली जो ट्रेड्स हैं कभी कभी मैक्सिमम टाइम्स इंट्राडे प्रॉफिट दे देते हैं तो हम ले लेते हैं. hmm, hmm. तो बेसिकली जो मैंने आज तक वेबिनार्स किए हैं लाइक कैंडल साइकोलॉजी और ओपन इंटरेस्ट, इन लोग इनको प्लस स्विंग को थोड़ा पकड़ के और यही सब देख के मैं ट्रेड्स करती हूँ. जैसे मेरा Okay. एक बहुत ही फेवरेट पैटर्न है और सिंगल स्टैंड अलोन कैंडल जिसको मैं कभी भी मिस नहीं करती चाहे वो राइट हो या रॉन्ग. वो है गैप अप ओपन हाई और गैप अप ओपन लो. ये मेरा Hmm. फेवरेट सेटअप है. और इसके बाद अगर सपोज करो ये मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मिल जाते हैं, नथिंग लाइक दैट. सपोर्ट पे Hmm. गैप अप ओपन लो, रेजिस्टेंस पे ओपन हाई गैप अप, बस नथिंग लाइक दैट फॉर मी देन. So I'll be तो जो searching आप more on this along with open interest, long built up, short built up. ये जो है that gives me a trend. मतलब सो ओपन चार्ट ने इंटरेस्ट तो आपको जब कंफर्म आप कर दिया. हाँ इंट्राडे जब ओपन इंटरेस्ट हम देखते हैं तो ऑब्वियसली वो लाइव तो होता नहीं, एक्सचेंज भी उसको 3 मिनट डिले देता है. तो बिल्कुल कितना रिलायबल है वो? सर रिलायबल है बिकॉज अपनी जो स्टडी है जैसे हमने लॉन्ग बिल्डअप देखा है तो एग्जैक्टली हम 9:15 9:30 बजे तो ट्रेड ले नहीं लेते हैं, हमको थोड़ा उसको स्टडी करना पड़ता है. और जब वो हम्म. हमारे साथ में एक पैरामीटर के साथ हमारा सेट हो जाता है विथ जैसे मान लो मुझे ओपन लो मिल गया ऑलमोस्ट नियर बाय या गैप डाउन ओपन लो मिल गया विथ लॉन्ग बिल्डअप and along with highest put open interest, so at that time we can take a trade with a stop loss, all trades with stop loss. और उनमें जो मूवमेंट आती है बहुत स्विफ्ट आती है. और जब आती है अगर ऐसा सिनारियो होता है तो हमें 2-3 दिन में ही रिजल्ट्स मिल जाता है. जो आपने देखा होगा मेरे मैक्सिमम या तो 2-3 दिन में रिजल्ट मिल जाते हैं, अदरवाइज आई एम आउट ऑफ द ट्रेड. यस, ये तो मैंने देखा है. इनफैक्ट मैंने स्टॉकेज में आपके नाम का एक स्कैन बना रखा है जिसमें ओपन लो, पुट कॉल रेशियो और ओपन इंटरेस्ट, इन तीनों से मैं एंड ऑफ द डे स्टॉक निकालता हूँ और नेक्स्ट डे के लिए उनको ट्रैक करता हूँ. तो बहुत कई स्टॉक्स तो पागलों की तरह भागते हैं. तो अगर यस उनको पकड़ लिया जाए सही टाइम पे तो पैसे बन सकते हैं, यस बहुत बन सकते तो है ना अच्छी चीज. हैं. सिंपल एकदम. है, बहुत काम की है. और मजे की बात है मैंने ये वेबिनार मतलब मैं ये हर सैटरडे को जब मेरा सीपी होता है बीएससी एनएससी में मैं ये सब फ्री में सिखाती हूँ. जितने वेबिनार्स है यूट्यूब से सब में ये मैंने ओपन इंटरेस्ट के बारे में सिखाया हुआ है. यहाँ तक कि वो कितना रैली कर सकता है, कितना हमको टारगेट दे सकता है, वो भी मैंने सिखाया हुआ है. आई होप पीपल टेक्स मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दैट.
100%। हमारे जो क्लब और मेंबर्स हैं, आपके साथ जुड़ने का पर्पस भी सबसे बड़ा यही है, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ पर्सन हु बिलीव्स कि मैं दूसरों को सिखाऊं और वो लोग कमाएं। तो मेरा भी वही नेचर है, इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। एकदम ज्योति जी, थैंक यू सो मच ये बोलने के लिए। और शॉकेज क्लब के मेंबर्स लोग तो आपको पता है बहुत सीरियस लोग हैं, फ्री राइडर्स नहीं है वहाँ पे। तो कुछ भी आप बोलेंगे तो उसको सीरियसली सुनेंगे, वो हम 29 को देखने वाले हैं। सो लेट मी कम बैक टू सुनते भी ज्योति है, जी एंड सुनते भी। लेट मी हाँ, जस्ट, बोलिए। एकदम सुनते हैं, बहुत एक्टिव, और आपकी तो बहुत ज्यादा ही सुनते हैं वो लोग। चलिए, अभी अभिजीत दादा के पास चलते हैं। दादा केमन आचन, हाउ आर यू? Going good, thank you. How have you been? All great, all great. Now you tell me, how do we become better in this market? Focus on risk. You can only get better, no matter what kind of markets it is, 2020 market or 2022 market. As long as someone focuses on the risk return, if you do your homework well, return to bazaar dega, market will give. You cannot just get the return because you want the return. So Yeah, as long as we just focus on risk, it's not a trending market. Still focus on risk. If it's a trending market, you're making money. Still focus on risk. So I think risk management, number one, and number two, compulsive na hona. Personally, at my end, whenever I have tend to become a little impulsive, uh, that's where the market actually thrashes you bad. So, option trade karo, futures, cash, whatever you do, I think if you don't have a hand on the risk, it's not going to work. No matter what good a software or a strategy or the PhDs you may have in your office, or we do see big firms go bust, and the main reason घुमा फिरा के वो एक ही आता है, they did not take care of their risk. So very simple, correct. but So important. इंट्राडे के अंदर में तो बल्कि उसका और ज्यादा रेलेवेंस है, बिकॉज इंट्राडे आई फील इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। तो डू वी सी यू, आप काफी बात करोगे, थोड़ा हिंदी में बात करते हैं, तो आप बिल्कुल काफी बात बिल्कुल। करने वाले हो इंट्राडे में रिस्क को कैसे मैनेज करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ओपन एंडेड हो जाता है कई बार। तो डू वी हियर दिस फ्रॉम यू ऑन 29th? Yes, of course. इंट्राडे में फोकस ये होना चाहिए, आई थिंक लेस इज मोर मींस ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 5 8 10 ट्रेड्स करने जस्ट बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। मुझे लगता है कि एक हथौड़ा मारो, एक ट्रेड करो या 2 ट्रेड करो इंट्राडे, बट डू इट प्रॉपर्ली रादर देन चेजिंग 5 6 स्टॉक्स के मेटल्स भी भाग रहे चलो वहां पे भी ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी गिर रहा है चलो उसको भी शॉर्ट करते हैं, आईटीसी। I think preparation for an intraday trader is more important because intraday trader का biggest disadvantage है आपके हाथ में ज्यादा वक्त नहीं है, right? So your time is bounded and you better time it really well. सोचिए I take a positional trade, आज लेता हूँ 3 4 दिन फ्लैट रहता है, परसों जाके मूवमेंट देखता है, it's fine because मेरा तो होल्डिंग है। बट फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर वो लेने के बाद अगर वो स्टॉक नेक्स्ट 2 घंटा साइडवेज रहता है, he will lose the patience. And within that 2 hours, कोई और stock या sector will start to move. So I think intraday trader को number one अपने यूनिवर्स सेलेक्ट करना चाहिए और जितना कम हो सके उतना अच्छा है। सिर्फ बैंक निफ्टी फोकस करो या सिर्फ 4 5 स्टॉक्स फोकस करो, नंबर वन। नंबर टू, स्ट्रैटेजी भी एक या दो ही होना चाहिए। यू शुड नॉट फोकस ऑन मल्टीपल स्ट्रैटेजी। सो बिकॉज यू विल बी डूइंग क्विक ट्रेड्स, focus for an intraday trader is very important. You need to be shrewd. बाजार देता है, ले लो, you know. In one of the CP programs मैंने जब लिया था कुछ 3 4 साल पहले, a very old and bold trader once told me, Abhijit, I only focus on EPS VPS मैं नहीं देखता, मैं सिर्फ EPD देखता हूँ। PPD? EPD क्या होता है सर? अर्निंग्स पर डे। आज कितना आया, ईपीडी, ईपीडब्ल्यू, ईपीएम, आप कुछ भी बोलो। सो आप सही गए हो, बाजार आपको दे रहा है, ले लो, कल फिर से देखेंगे। सो अ ग्रिप ऑन द इमोशन, अ ग्रिप ऑन योर ग्रीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कीपिंग इन माइंड कि टाइम नहीं है इंट्राडे ट्रेड, योर टाइम इज बाउंडेड, ट्राई टू ट्रेड लेस and good trades. I think this kind of a shift has worked for me to a lot of extent.
I hope it works for others also. Yep, I agree to this. Less is more in stock market. This people realize this after they lose fair bit of hair. That's always the case. All right, chalo. Let's onboard every one of you here and let's play some game. So this I do when I have many more people together. तो चलिए. So ऐसा है कुछ questions पूछूंगा. Yes and no का answer है. This is yes and this is no. Okay, so you can say it like this: yes and no. All right. And if I give you options, 1, 2, and 3, self-explanatory. Okay. Now, first question. When we are doing intraday trading, 3 सेशन होते हैं: मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग. सबसे ज्यादा पैसा किस सेशन में बनता है? सो मॉर्निंग इज 1, आफ्टरनून इज 2, इवनिंग इज 3. I have no clue. When Bazaar gives me a I have second, morning and afternoon, but not evening. After 2:30, no. अच्छा, तो एक बार इसको थोड़ा घुमा लेते हैं क्वेश्चन को. तो इवनिंग के अंदर में पैसा बनता है कि नहीं बनता है? Yes. 1 इज बनता है, 0 इज नहीं बनता है. Yes. Sorry, आपका voice got cut. अच्छा, सो क्वेश्चन इज 1 इज इवनिंग में पैसा बनता है, इवनिंग मार्केट में. 0 इज पैसा नहीं बनता है. We are playing for Very that, rarely. right? Very So rarely. basically, you know what Abhijit said, that there is no fixed rule. What Akhilesh also said, there is no fixed rule. Whatever works for anyone. किसी के लिए कुछ work करता है, किसी के लिए कुछ work करता है. That's true. That's see, that's I'll very just true. add a small thing here, Vivek, if you Yeah. allow me. आप Yeah, किसी भी stock का intraday, let's say 5 या 15 मिनट का अगर time frame खोल के देखेंगे, you will see the volumes curve will always be U-shaped. So maximum of the volume starts at the opening 30 to 60 minutes, 40 minutes, 45 minutes, and 3 to 3:30. So that's the curve of the volumes. Histograms will always be like a U, which means that the Yes. maximum participation is happening in the first 30 minutes and the last 30 minutes. I have been an institutional broker, so I exactly know why such a U curve happens. My only point is, I cannot take a trade based on time. मुझे जब बाजार मौका देगा, मैं कोशिश करूंगा चौका मारने. अब वो दोपहर को 1 बजे दे या 10:30 बजे दे, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कुंडली मैच होगा तो ही जाके आई विल टेक द स्टेप. दैट इज माय बिलीफ. बट यस, द मैक्सिमम वॉल्यूम्स आल्सो कम्स विद मैक्सिमम मूवमेंट. Maximum movement also leads to maximum possibility of profits. So I would say that morning and the closing will give you the maximum movement. If you get a step there, then it's fine. लेकिन अगर दोपहर को भी movement आता है, why not? Got it. Got it. खाली Anyone इसमें else? एक चीज ऐड Yeah. करूंगा. मैंने सबसे ज्यादा पैसा खोया है when I have tried to do trade at open based on a predetermined mindset कि आज ये करूंगा. I agree with that. So, Yes. so the first 15 minutes is the most volatile, and if you look at global cues, if you go into the market with a predefined mindset, that is where I have lost maximum amount of money. So I try to avoid entering into a trade based on a predetermined mindset in the first 15 minutes. Can So I I add have a something here? question. Yes, Mr. Brahmachari. Yes, Mr. Brahmachari, and then Jyoti ma'am. So the rule is here is the 70% of the time markets stays in the sideways. Only 30% it will trend. So that 30%, whether you are in intraday player or a swing trader or in a positional trade, swing nesting kind of thing. So if you look at any chart, any time frame, it's 70% of the time it trades in the ranges. So I prefer that ranges to be fine and wait for the patiently wait for that breakout or breakdown, whatever it is. So the question is whether are you in that 30% of the time or not? That's the question here. Sure. Yeah. सर ज्योति ऐसा मैम? होता है जी सर, ऐसा होता है, ट्रेडिंग का टेम्परामेंट होता है. अगर मैं पूरे दिन बात करूं तो फिर आई हैव टू सिट ऑन द एज ऑफ द सीट, Yes. जो कि बहुत मुश्किल काम है. अभी एक टाइम सिलेक्ट अगर हम करते हैं 10 to 2:30, तो रफली जो आपकी मेन मूवमेंट्स आती है वो टाइम पे आ जाती है.
जो एकदम ओपनिंग में आती है, जो एकदम क्लोजिंग में आती है, उसके लिए हाई एक्सपर्टाइज चाहिए। वो सब लोगों के पास नहीं होता, और अगर सब उसमें आने की कोशिश करते हैं तो वहां पे उन लोगों को नुकसान होने के चांस होते हैं। लेकिन 10 to 2:30 सबको मौका मिलता है अपना अपना हिस्सा निकालने का। So Say, he'll very get well said. I think we have quite a diversified answer in this question, which is after good. five That's why minutes of market the time, interest. Vivek ji, after Hmm. 5 minutes of trading, you'll get the open interest data. There itself, you'll get many clues in that. Which one is going to be your last? Correct, correct. So this we are anyways going to discuss on 29th and see which stock has given what on that particular day. That will be a very interesting discussion. Acha, again, one more question. Do you guys see SGX Nifty and trade based on that? One is No. yes, zero is so. Then who is watching all these SGX Nifty? I don't इसका understand. जवाब दूं? हाँ दीजिए सर, दीजिए 3:30 बजने के बाद हम कोई ट्रेड ले नहीं सकते, हाँ और 9:15 के पहले हम कोई ट्रेड ले नहीं सकते। तो हाँ रात की नींद क्यों खराब करें? See, trade what you see, sir. Simply see, you cannot trade what you only see what you are going to trade tomorrow morning or today or whatever it's the time frame is, which you are not trading. Forget that instrument simply. good I'll good fair enough. I'll just add a small little thing that SGX Nifty is an instrument which can easily be used by a fund or a serious player who can hedge his positions. If I am predominantly trading the Indian markets, that is more like an indication of where I'm expected to open tomorrow morning. That does not necessarily mean that I cannot go up or come down. It's more like an indication of an open. But then, if we look from a slightly larger point of view, let's say I'm a fund and I'm a prop desk at a certain size, and if it's possible for me to have offshore funds, then that is a very important instrument for me. If tonight Fed comes up with something here and there, I can of course hedge my positions. So that's a route, that's a way in which a serious certain size players in multiple countries can look into it. Apart from that, from a retail point of view, it's just an indication. Acha, bazaar kahan khul sakta hai? And that's it. Right. Fair point. Okay. So my last question as part of this is, given a choice, uh, you will not trade intraday trading. One is yes, I will not trade, and zero is no, I will trade. Okay, neutral. Again, you want to be an मौका मिला तो opportunist. चौका लगेगा ही लगेगा। Okay. So Sir, given we that are you're a traders. We full-time cannot trader, sit with specific mind. We have to be on the study. I स्टडी See, अगर uh, अपने को इंट्राडे देती है तो करना पड़ेगा, और अगर पैसा देते है तो लेना भी पड़ेगा। मिल जाएगा, I to a बहुत lot Amit, of अच्छी बात है। extent agree with ma'am here because if I take a trade tomorrow morning, ये सोच के कि this looks like a chart, this looks like a trade जो 3 से 4 5 दिन के लिए है, लेकिन हो सकता है वो उसी दिन भाग जाए. If it gives me 5 6% kind of a move, if you remember in one of my trades this month with Stockage, I gave a trade on Indian Bank. yeah, The stock moved, I think 6 7% on the day I gave the trade. If someone is happy with it, पेट भर जाता है, I'm content, close it. So the सही thought बात है. process was of a positional trade, but वो intraday बन गया. But opposite नहीं करना चाहिए. आप सोच के आ रहे हो intraday, but वो loss में है, आप उसको positional बना के जा रहे हो. That's a little harmful thing. I think before anyone takes a trade, what is the kind of trade is this? Is this a intraday trade? Is this a positional trade? Define it and stick to it. And opportunities मिलता है, you take it. सही है. and one more rule, सर to follow is, madam, you go ahead. I'll tell you that. सर हम लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, Yeah. तो अगर अपॉर्चुनिटी मिली और उसको ये बोल के छोड़ दिया कि इंट्राडे के लिए ही है या ये पोजिशनली है, तो फिर मजा नहीं आएगा। Yeah. The another rule to अपॉर्चुनिटी जब भी success in the, मिलती है तो यू शुड हिट इट। समझ गए. yes. Yes, ब्रह्मचारी जी. Yeah, the another rule to follow in the particularly in the intraday trade is
if you are in a profit, better you should not go losses again and again. So it That's has to true. be, yeah, you have to exit at least at the par. Okay, if you are unable to, don't wait till the stop loss comes to you. No, once your position is in profit, it should not run into the losses. That's a fundamental rule in the trading. The second thing is, suppose I am expecting 2%, 3% capital for the next 2 days. So within before that time, it has already achieved. Better exit that. You are most disciplined trader. You are a guru. Simply, when your target has achieved, better exit that. Got it. So Perfect. as Jyoti ma'am said, you have to be opportunistic. Intraday, I look for trades where I expect, particularly around events. Like for example, Aj, uh, McDowell's had run up before the results, and results Yeah. disappointed yesterday. And so I went into with a mindset कि अगर वो नीचे अगर if it opens within the 1 to 2% gap down, I will try to take a trade with a stop loss, and it went intraday down. It went 7.5%. So Yeah. particularly after an event, if you are in command of the event, exactly what market was expecting, and if based on that, if there is a good risk reward, I try to take that trade on an intraday basis because the movements are big. Just like Jyoti ma'am was giving an example of gap up or gap down trade, something similar happens typically happens post event, and if the setup is favorable, exactly 200 DMA paid trend line resistance tha, and it fell 7.5% today. So if those kind of compelling setups are there, intraday trades work superbly. Fantastic. So pretty much I got my important questions answered, but I will have lot many questions when we meet on 29th, and Stockage Club members will be there bombarding you with a lot of questions. But I'm very happy that you guys will be giving them enough time. I think every one of you would be there for at least 1.5, 2 hours, and also there'll be commodities and currency trader talking about those two assets. So I'm looking forward to it. और दोस्तों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टॉकेज क्लब ज्वाइन करिए, वहाँ फ्री है. देयर इज नो कॉस्ट फॉर दिस इवेंट for Stockage Club members. So you can join Stockage Club and enjoy this patronage of right learning and earning from us. Thank you so much, all four of you. You are one of my favorites. So Thank you. thank you. And thank you for the great Thank you, sir. association Thank you you. are giving. Thank Thank you you very everyone. much. Look Thank forward you. Thank to you. seeing you on Thank you. 29th. See you on 29th. See you. Yes, sir. Thank you. तो चलिए दोस्तों, ये तो था कि छोटे छोटी बातें कर लिए विद आई मीन दीज जेन्युइन पीपल. देखिए, स्टॉक के सोशल में कोशिश यही रहती है कि जेन्युइन लोग जुड़े, जो एक्चुअल में मार्केट में काम कर रहे हैं, मार्केट से पैसा बना रहे हैं और आपको एक्चुअल में पैसा बनाने का सही साइंस बता सके. सो स्टॉकेज क्लब इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्किंग. एक कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं, 9,000 से ज़्यादा मेंबर इसमें हो चुके हैं, एंड ऑल प्रीमियम मेंबर्स. देयर इज नो स्पेस फॉर फ्री राइडर्स. तो अगर आपको लगता हो कि आपको एक कम्युनिटी सपोर्ट हमसे चाहिए, यू वांट टू बी रियल टाइम कनेक्टेड विद अस, and you want to enjoy this whole journey of learning and earning from market, join Stockage Club today. And this is a great reason to join, because this event is going to be scheduled and will be live tomorrow, day after tomorrow. लेकिन उसके बाद भी आप हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, and we'll try our best to give you the right education to become fully independent in financial market. चलिए, thank you so much. Good night, and please take care of yourself.